हेलो फ्रेंड्स मो रंजीत एही वीडियो रे आमे OSSC CGL सिलेबस रो जनरल नॉलेज रो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिगार्डिंग बेसिक टू अपर लेवल रो क्वेश्चंस रिवीजन करबा। ये हला पार्ट नंबर 1। तो चलंतु मो सह प्रथम रु शेष जाय रही थरे क्विक रिवीजन करि नियंतु। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए लेजिस्लेचर ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो को शेड्यूल मेंशन अछि? तो यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी 10th schedule रे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यार फीचर कोटा या भितरु? एग्जीक्यूटिव इज रेस्पोंसिबल टू जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पोंसिबल टू लेजिस्लेचर। तो यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? देखंतु एही वीडियो द्वारा आपण निजर केते दूर प्रिपरेशन हेछि ताहा जानि परिबे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पीकर इज करेक्ट। देखो जो जगह क्वेश्चन बुझी पारना से जगह वीडियो पॉज करंतु, क्वेश्चन निजे पढ़ंतु, आंसर कौन हम डिसाइड करंतु, देन प्ले करंतु, तापर आंसर जानिबे। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट हबनी भूल अछि। ही नीड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन but has to become a member of the house within 6 months from the date of his election। तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। ठीक अछि। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लेफ्ट साइड रे अछि, राइट साइड रे सोर्सेस अछि। देखिबा तो फेडरेशन कोड आसीची, फेडरेशन कोड आसीची, फेडरेशन आसीची कनाडा रो। पार्लियामेंट्री कोड आसीची, पार्लियामेंट्री सिस्टम जोटा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम आसीची ब्रिटेन रो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल समस्त जानिछंती आयरलैंड रो। लास्ट वन होची फंडामेंटल राइट जोटा कि होची यूएसए रो। तो ए हे जाउची 3, ए हे जाउची 3, पार्लियामेंट्री हे जाउची 2, तो 2 अछि एठी। तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज, तो इंडिया पाखरे कोन अछि, बोथ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, a system of collective responsibility, bicameral legislation, the system of judicial review। तो यार करेक्ट आंसर होबो ऑप्शन नंबर डी। ठीक अछि। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी रो कोटा बोरो करा जायछि। द आइडिया ऑफ फेडरेशन विथ ए स्ट्रांग सेंटर, नो। द मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नो। इमरजेंसी पावर, नो। Provisions concerning the suspension of fundamental rights during the national emergency। तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहि परिबा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज और आर levied by the union and collected and appropriated by states। तो एटा होची स्टाम्प ड्यूटीज टैक्सेस। तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। एटा मध्ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग लेफ्ट साइड रे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स अछि, राइट साइड रे सोर्सेस अछि। तो ए जगह रे मैच करेबा कोटा का सहित कोन अछि। तो देखिबा रूल ऑफ लॉ कोड आसीची, रूल ऑफ लॉ ये आसीची ब्रिटेन रो। क्लियर? तापर डायरेक्टिव प्रिंसिपल एबे रिसेंटली हमें डिस्कशन करथिले कोठो आयरलैंड रो आसीची। क्लियर? तापर कॉन्करेंट लिस्ट होची ऑस्ट्रेलिया रो। तो देखंतु ए हे जाउची कोन 4 हे जाउची, A4 ठीक अच्छे। तापर डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो जाउची आयरलैंड B3। ठीक अच्छे। तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन्स दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। या तो कोटा जणुची जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होची फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर कोन हबो देखिबा। ऑप्शन देजी ए रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर विथ द सेंटर, नो। The distribution of powers between the center and state, this is important question, option number D will be correct answer। Next, which of the following features and their source is wrongly matched। कोटा wrongly match हेछि से हमें देखिबा, फाइंड आउट करिबा। तो ऑप्शन देखिबा जुडिशियल रिव्यू, ब्रिटिश प्रैक्टिस। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो जुडिशियल रिव्यू आसीछि कि नाही एटा जगह पचरा जायछि जोटा कि भूल। तो जुडिशियल रिव्यू कोड आसीछि, कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिकि जणेबे। तो कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक अच्छे। नेक्स्ट, एटा भूल थिला, जुडिशियल रिव्यू कोड आसीछि, कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणेबे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, कोटा करेक्टली मैच हेछि देखिबा।
Amendment procedure, Article 268. Duties of Prime Minister, 74 article, wrong. Presidential rule, 365, totally wrong. Interstate Council, 263. तो यार करेक्ट आंसर कौन होची? ऑप्शन नंबर डी. क्लियर? नेक्स्ट. तो ये जगह आउ गोटे क्वेश्चन मैं आपको पचारि आपण मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानबे. अमेंडमेंट प्रोसीजर को आर्टिकल मेंशन करा जायछि? कमेंट करिवे. नेक्स्ट. Which constitution has inspired the Indian concept of rule of law, parliamentary system and law making procedure? Which constitution has inspired the Indian concepts of rule of law, parliamentary system and law making procedure? को constitution रो Indian कहि परिबा इंस्पायर हेचंती? तो करेक्ट आंसर कौन होबो? US constitution? No, wrong. तो यार करेक्ट आंसर होबो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. Which of the following authorities recommends the principles governing that grant in aid of revenues to states out of consolidated fund of India? Which of the following authorities? Co-authorities recommend करे the principles governing that grant in aid of revenues to states out of consolidated fund of India. तो correct answer होबो sorry Finance Commission. Option number A will be correct answer. Next easy question दिला. The Constitution of India borrowed the scheme of Indian Federation from the Constitution of कोठ आना जाइछि? तो यार करेक्ट आंसर कौन होबो? ऑप्शन नंबर बी कनाडा. ठीक है सम पूर्व ऑलरेडी हमें सेम क्वेश्चन आसी सारी थिला. मैच द फॉलोइंग रे. नेक्स्ट. Under which one of the following constitution amendment acts 4 languages were added to the languages under the 8th schedule of the Constitution of India, thereby raising their number to 22? 22 को हला. केते नंबर अमेंडमेंट पर हला? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. 92nd 92 अमेंडमेंट रे सेटा चारिटा लैंग्वेज को इंसर्ट करा गला. क्लियर हला? ठीक अछि. Next. The Indian Constitution closely follows the constitutional system of कहा को फॉलो करे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली? तो करेक्ट आंसर कौन होबो? यूके. कहा को? यूके को. नेक्स्ट. Which of the following special powers have been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India? को स्पेशल पावर अछि? तो ऑप्शन थ्रू जानिबा. To change the existing territory of a state and to change the name of a state. To एटा भूल. To pass a resolution empowering the parliament to make laws in the state list and to create one or more all India services. एटा करेक्ट अछि. ऑप्शन नंबर बी will be correct answer. ठीक अछि. नेक्स्ट. Which of the following is a feature common to both the Indian Federation and the American Federation? कोडा कॉमन या भितरु? A single citizenship? ना. Dual judiciary? No. 3 lists in constitution? No. A federation supreme court to interpret the constitution? The correct answer will be option number D. Clear? Next. Which of the following statement is correct? यादरो को statement टा correct अछि बोली कहबा. The parliamentary form of government emphasizes on the independence between the legislative and executive organs. आउथरे पढिया. The parliamentary form of government emphasizes on the independence between the legislative and executive organs. The correct answer होबो A. Correct answer A. ठीक अछि. Next. The inspiration of liberty, equality and fraternity was derived from कोठो derive करा जाइछि? तो correct answer कोन होबो? फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो. कोठो? फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो. बहुत कॉमन क्वेश्चन आ इजी क्वेश्चन आ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्य. Who among the following can be the chairperson of the National Human Rights Commission? किए chairperson हेई पारिबे? A member of their House of Parliament? No. A Chief Justice of Supreme Court of India? तो correct answer होबो ये ऑप्शन नंबर B. Most important question. Clear? Next. Indian President and Prime Minister are a replica of the heads of the state of which country? बहुत इजी क्वेश्चन है गला. ब्रिटेन रो. ठीक अछि. ब्रिटेन रो. Next. The objective of including directive principles of state policy says that the state shall seek to ensure कौन? To establish a welfare state. हाँ ठीक अच्छी. To establish a welfare state. To provide best opportunities for government. To establish a democratic state. एटा हबने. तो correct answer होची to establish a welfare state. Option number A will be correct answer. Clear? Next.
The President of the Indian Union has the same constitutional authority as the same kaha सहित अछि constitutional authority. Correct answer कौन होबो British monarch कौन British monarch. Option number A will be correct answer. बहुत important question कहि परिबा. Which of the following constitutional amendments states that the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the House of the People? को constitutional amendment रे कोहा जाइतला माने करा जाइतला तो करेक्ट आंसर हबो 91st को हबो 91 अमेंडमेंट एक्ट रे. क्लियर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन गुडी को जदी भल लागुची माने भल पैटर्न रे अछि देन वीडियो भल लागुची जदी फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करछंती देन सब्सक्राइब निश्चित करिवे एवं चैनल को शेयर मध्य करिवे निज सांग मान सहित जदी भल लागुची तो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट. या तो कोडा डिस्क्राइब करे जे इंडिया गोटे सेक्युलर स्टेट बोली. फंडामेंटल राइट नुह, 9th schedule नुह, डायरेक्टिव प्रिंसिपल नुह, preamble to the constitution. Correct answer will be option number D. Next, which of the following statements regarding money bill are incorrect? या तो कोटा incorrect से पचारिछि. A money bill can only be introduced in Lok Sabha and Rajya Sabha. A money bill can only be introduced in Lok Sabha. Rajya Sabha has no power to make a change in it against the will of Lok Sabha. Tayara correct answer kon hobo option number A. Next, in parliamentary form of government, real powers of the state are vested in the का पाखरे थाए obviously Council of Ministers headed by the Prime Minister. Option number A will be correct answer. Next, financial distribution between the union and the state takes place on the basis of the recommendation of which one of the following? Financial distribution between the union and the state takes place on the basis of the recommendation of which one of the following? कौन होगा? The National Development Council ना, the Interstate Council no, the Planning Commission no, the Finance Commission. कौन होगा? Option number D will be correct answer. Next, which of the following is not a basic feature of the Indian Constitution? या तो कोटा basic feature नुहा से पचारची. Presidential government. ओहो तो यार करेक्ट आंसर हम ए जोटा कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जोटा कि गोटे बेसिक फीचर नुह आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कोटा करेक्ट नुह. इन लोकसभा ए नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज टू सेट आउट द ग्राउंड्स ऑन व्हिच इट बेस्ड. तो एटा भूल ही अछि. ऑप्शन ए ही भूल अछि. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए भूल अछि. तार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए जोटा कि भूल. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट. देखो ये पूर्व क्वेश्चन रे फर्स्ट ऑप्शन भूल अछि तो बाकी तीनटा ठीक थिबो. कोन अछि रिगार्डिंग देखिबा. इन द केस ऑफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोक सभा नो कंडीशंस ऑफ admissibility have been laid down in the rules. ठीक अछि. A motion of non-confidence once admitted has to be taken up within 10 days of the leave being granted. ठीक अछि. Rajya Sabha is not empowered to entertain a motion of no confidence. तो ये तीनटा को ठीक अछि. ऊपरटा भूल अछि. Next, the Constitution of India is designed to work as a unitary government. In normal times, in times of emergency, when the parliament so desires, at the will of the president. कौन होगा यार करेक्ट आंसर? यार करेक्ट आंसर होगा इन नॉर्मल टाइम्स रे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजाइन है जोटा कि काम करियो यूनिटरी गवर्नमेंट हिसाब रे. नेक्स्ट, सॉरी भूल कहली. इमरजेंसी टाइम रे ठीक अच्छे. इमरजेंसी टाइप रे हम सॉरी इमरजेंसी टाइम रे आमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे मेंशन है माने एमिति डिजाइन है जोटा कि से गोटे यूनिटरी गवर्नमेंट हिसाब रे काम करिवो. ठीक अच्छे. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइन्स द अथॉरिटी हु शall readjust the allocation of seats in the Lok Sabha to the states and division of each state into territorial constituencies. किए डिटरमाइन करे? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो ऑप्शन बी हम यार करेक्ट आंसर क्लियर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिजेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या कोटा को फीचरटा रिजेंबल करे नाही अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सहित रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन करे फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट करे फंडामेंटल राइट्स ओबियसली पार्लियामेंट्री फॉर्म एटा करेनि तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज करेक्ट तो डीपीएसपी हिसाब रे कोटा करेक्ट स्टेटमेंट बोली ए जगह से पचारिछि पढ़िबा फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन upon the state action while directive principles are in the nature of instruction to the government to achieve certain ends एटा तो ठीक अछि दे आर जस्टिसिएबल इन सर्टन रेस्पेक्ट नो भूल अच्छी दे इन तो ठीक ही अच्छी ऑप्शन ए तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए नेक्स्ट फ्रॉम व्हिच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज तो कोठू फंडामेंटल ड्यूटी जना जाइछि समस्ते जानिछे करेक्ट आंसर हम यार यूएसएसआर व्हाट डज द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील विथ 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे कोन मेंशन करा जाइछि Inclusion of Bodo, Dogri, Maithili and Santali languages in its schedule. Inclusion of service tax levied by union and collected and appropriated by the union and the states in the 7th schedule. No. Free and compulsory education for all children between the age 6 to 14 years. ठीक अछि तो correct answer will be option number C. Next. The word socialist was added to the preamble. Its main aim is to यार मेन एम कौन थिला ऐड हैला बेलू एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अफेयर्स एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ एलिमिनेट क्लास बेस्ड सोसाइटी तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए एटा प्रिसाइजली मन रखा पड़ो सठिक भाव में नले ऑप्शन गुडी को आपन को कंफ्यूज करि पारे In which of the following situations does the president promulgate an ordinance? को situation रे promulgate करंती ordinance जारी करंती ऑप्शन देखिबा there is disagreement between two houses of parliament over a bill both houses have refused to pass a bill sponsored by the government with the previous sanction of president no a bill has been pending in parliament for a long period na पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन तो यही टाइम रे ऑर्डिनेंस जारी करा जाई परिबो प्रेसिडेंट को द्वारा नेक्स्ट व्हिच ऑफ द पेयर्स इज करेक्टली मैच कोटा करेक्टली मैच करा आइछि सेटा पचरा जाइछि रिपब्लिक जोटा कि होछि हेड ऑफ द स्टेट इज हेरेडिटरी मोनार्क भूल सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑन पीपल्स विल Democratic constitution does not recognize legal supremacy of another country. Constitution does not recognize legal supremacy of another country. ठीक नारा भूल अच्छे. Secular state is without any religion of its own. तो correct answer होची correctly match होची option number D. तो correct answer होगा option number D. Next, what does the 104 Constitution Amendment Bill relate to? तो 104 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सहित या ऑप्शन गुडी मधुर कोटा रिलेट करूची देखिबा प्रथम दला एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन सर्टेन स्टेट्स भूल इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल सिटीजनशिप फॉर पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन लिविंग आउटसाइड इंडिया ना प्रोवाइडिंग कोटा टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी ठीक अछि हाँ providing quota to social and educationally backward classes in private educational institution. The preamble enshrines certain ideals that were first spelled out in. The preambles enshrines certain ideals that were first spelled out in. कौन? The speech by Jawaharlal Nehru on the banks of Ravi River when he called for Purna Swaraj. No. The Nehru report. No. A resolution adopted at Karachi session for the Indian National Congress. No. Objectives. Resolution adopted by the Constituent Assembly.
ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ बिल इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट along with the union budget which of the following sets of bill is presented to the parliament along with the union budget कोटा direct taxes bill and indirect taxes bill ना contingency bill and appropriation bill no contingency bill and appropriation bill no finance bill and contingency bill no finance bill and appropriation bill तो correct answer होगा यार option number D the part of the constitution that reflects the mind and ideals of the framers is कोटा माने constitution रो जोटा कि reflect करे mind और ideals of the framers मानकर mind और तांकर ideals गुडी को Directive Principle नुह Fundamental Rights नुह correct answer होगा Preamble कोटा दर्शाए Preamble ही दर्शाए next who Preamble देखो जानी चे for the people जो कोई परिबा माने हमरो जो कोई परिबा एटा people मानको पाई ही constitution जो तरह की कुआ जाइची who among the following was the first law minister of India किए law minister हमरो इंडिया रो प्रथम तो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम डॉक्टर बी आर आंबेडकर क्लियर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल सेम क्वेश्चन आई थिंक रिपीट होइची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन्स दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल ठीक अच्छे चलो a written and rigid constitution no an independent judiciary no vesting of powers with the center no distribution of powers between the center and states एटा जोटा कि कहूची हमरो डिटरमाइन करची इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल नेक्स्ट द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर दैट फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन He is responsible for the preparation for the union budget and causes it to be laid before the parliament. He appoints the chairman. ना এটা ठीक होगा. He is responsible ना. हाँ से he is responsible for the preparation for the union budget and causes it to be laid before the parliament. ठीक अच्छे এটা. He appoints the chairman and members of the finance commission. ठीक अच्छे. No money bill can be introduced without his prior approval. Obviously ठीक कथा. तो ये करेक्ट आंसर हम ऑल ऑफ द अबव यार करेक्ट आंसर हम ठीक अच्छे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज बहुत इजी क्वेश्चन है फेडरल यूनिटरी पार्लियामेंट्री फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years ठीक था फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन from the date of his entering the office, from a date specified in the constitution, from a date notified by the election commission. There correct answer होगा from the date of his entering the office. ठीक अच्छे from the date of his entering the office. Next, there is a parliamentary system of government in India because there is a parliamentary system of government in India because the कारण कौन the Lok Sabha is directly elected by the people. No, Parliament can amend the constitution. The Rajya Sabha cannot be dissolved. There is a parliamentary system of government in India. Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha. এটা बहुत important question और बहुत माने भूल हुए ए जगह रे तो देखो तो ऑप्शन डी होगा यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तो एटा फर्स्ट पार्ट थला फर्स्ट पार्ट रे हमें 50 क्वेश्चन रिवीजन कले सुपरफास्ट स्पीड रे आउ नेक्स्ट पार्ट आम आउ 50 क्वेश्चन रिवीजन करवा एमती सुपरफास्ट स्पीड रे तो रेडी थे नेक्स्ट पार्ट रे देखा हुआ तो जो माने को भल लगी वीडियो कमेंट निश्चित करेंगे सब्सक्राइब निश्चित करेंगे लाइक निश्चित करेंगे शेयर निश्चित करेंगे एवं जो माने फर्स्ट टाइम आसछन्ती सब्सक्राइब निश्चित करिके निजर रिव्यू निश्चित देबे तो जो माने प्रथम शेष जाए देखिछन्ती सेमानकु मो तरफरु धन्यवाद।